अंकित, जब आपको लगा कि आप ट्रैप हो गए हैं इस लोन जी ऐप के थ्रू, तो फिर जी आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि ये और लोगों के बारे में जाने कि जिन लोगों को ये ट्रैप कर रहे हैं? आपने क्या किया फिर? मैम, टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने ना मतलब मेरे को डर लगता था कि मैं किससे बात करूं और क्या बोलूं, कि मेरी जो सोशल इमेज है, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। जिनके पास कॉल्स गई हैं या जा रही हैं, मैसेजेस जा रहे हैं, कई लोगों के जो मेरे पास कॉल आए, मेरे पास सडनली एक कॉल आया, तो वो मेरे जानने वाले थे, मेरे पड़ोसी है, नेबर है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके नाम से आपका नाम लिखा हुआ है और आपके फोन कांटेक्ट की, मतलब आपके नाम से आपने सेव करे होंगे लड़कियों के नंबर। वो लड़कियों के नंबर इतने गंदे तरीके से रिप्रेजेंट करे गए हैं यहाँ पे, और इतने गंदे तरीके से मैसेज आया है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने उनको बोला, भैया मुझे इस बारे में नहीं पता था किसने करा है, क्या करा है। तब मैं समझा कि इन लोगों ने करा है। और मैम, कंडीशन ये थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि यार मेरी सोशल लाइफ पूरी खराब हो गई है, अब मैं क्या करूं। कई बार ऐसा लगता था कि पता नहीं कि सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा अब। फिर हम्म। मेरे एक फ्रेंड से बात हुई, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई, कि ये सब चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही हैं इस समय। बहुत सारे लोगों के साथ ये डेली बेसिस पे फ्रॉड हो रहे हैं। तो तुम टेंशन मत लो, और हम लोग साइबर में चलते हैं, बातचीत करते हैं। तो हमने केस रजिस्टर करवाया मैम। पुलिस लोकल स्टेशन में गए, वहां पे रेस्पॉन्स नहीं मिला, पॉजिटिव इतना नहीं मिला। साइबर में गए, साइबर में भी हमने बहुत वेट किया, लेकिन जो रेस्पॉन्स मुझे लगता है मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम्म। और मैं समझता हूँ मैम, ये मेरे साथ हुआ है। मेरे फ्रेंड्स हैं, हम्म। उनको अगर मैं इस चीज के बारे में बताता हूँ, उनको वो भी अवेयर नहीं है। हालांकि पढ़े लिखे सब लोग हैं, सब सब लोग ठीक है, हम्म। लेकिन वो भी इन चीजों के, क्योंकि जब होता है ना मैम, हमारे साथ पहले कभी हुआ नहीं था, जब हो जाता है तो हमें नॉलेज आती है। हम्म। तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, उनको ये चीजें नहीं पता है। वो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई ऐसे भी होता है क्या। तो मैं उनको Yes, बताता हूँ कि because भाई there have been 7 बहुत ज्यादा suicides दिक्कतें चल रही हैं। in 2 months because of this entire nexus which is playing out. Uh, Amit Dubey, how do the operators behind these apps set up an infrastructure to evade police? Actually, first of all, this is a very organized system. This is not done by one or two people, but there are lots of people those are behind it, and most of these apps actually governed by the same management. So when we trace out one person, one app, these are just collection agents. When we arrest them, we get to know that actually they are working for other apps as well. So it's a very organized system, and first of all, they create a company in India. There are some CAs, they help them to register a company, and then they open an account, and then some money comes through illegal channels over here. We have identified some loopholes in the system through which they get into it, and then they are collecting money from different sources in those accounts, and then parking that money out of India. The money is actually going out of India. So this entire process involves multiple things. Developing app is normally hosted in Chinese servers, and then they use promotional infrastructure through Telegram, through Instagram, through Facebook, or even through call centers. There are some call centers running around. Those are offering these uh, loans Okay, to all those people, and they then are Mr. actually Dubey, directly calling what people. red flags should users be watching out for? See, first of all, whenever somebody asks you to install such app, you should check few things. The app should not take your permissions of your contact details, your memory, your camera, your microphone. These are the four critical parameters or peripherals of your mobile phone, which should not be given to any app as an access, because this will be misused eventually. So this is very first thing. Second, when you install any app, you need to take care of few things, that when this app was hosted, is it 2 months old, 1 month old, or 1 year, 2 years old? How many downloads are there of that app? Whether this is just 100 or 500 downloads, or it has millions and more than that. So some authenticity should be checked first of all, and whether it is governed by some authentic company, or there is some Gmail mentioned to upload that email, or there is some website of some authentic company which is mentioned. Whether the company is listed on RBI website as an authentic NBFC. So these are few checks someone should definitely do now whenever they are going for any such loan through loan apps. I will right now recommend that please, without any such verification, never ever trust or believe on any such app, because they are mostly viruses, and they are in
huge numbers. Hundreds of such apps are available. You just search on Telegram and you will find lots of such links, even on Play stores. Not many of these apps are still not removed from Play stores. They are still working over there. When I have checked it today, I've installed many of these apps today during demonstration, and I found that they are still taking your permissions of your camera, your phone book, and all other details. Though legally any such app should not be given this permission, they should be taken care of by Google itself. But they are actually bypassing all these checks, parameters, and they host it for a few months. By the time Google gets about it and they remove it, yes, by then they have terrorized done their job. Yeah, they have terrorized millions in India. Let me give the final words to Ankit. Ankit, आपको इस ऐप के बारे में किसने बताया, और जब आपने डाउनलोड किया तो क्या सोच करके डाउनलोड किया था? मैम एक्चुअली क्या था, जैसे मैं फेसबुक और यूट्यूब ये सर्फिंग करता था, ठीक है। सर्फिंग करते हुए उसमें एड्स आते हैं इन ऐप के। अब जैसे कि सर ने बताया था, मैं सुन रहा था, तो ऐप के इनके अगर उसमें जाएंगे ना, ऐप पे प्ले स्टोर पे, तो वहां पे इनके डाउनलोड्स भी मिलियंस में है। ऐसा नहीं है इनके डाउनलोड्स कम में है। और जो जेन्युइन भी ऐप है, क्योंकि ये मैंने बाद में R&D करी है, जो जेन्युइन ऐप भी है, जो NBFC से रजिस्टर्ड भी है, तो जब उनको भी इंस्टॉल हम करते हैं तो फोन के अंदर परमिशंस वो भी सारे कैमरे की, गैलरी की, कॉन्टेक्ट्स की वो भी मांगते हैं। और मैम ये जो ऐप है, जितनी भी ऐप है, मेन हमें लगता है कि जैसे सिस्टम है, सिस्टम इन द सेंस कि भाई हमने जहाँ पे कंप्लेन करी कि वहां पे अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं या जो हमें सोल्यूशन जहां से मिलने वाला है, मेन मुझे जो लगता है, मेरा ओपिनियन ये है कि उन लोगों का कहना ये है कि भाई ये जो एप्लीकेशंस हैं, ऐप है, ये यहाँ से ऑपरेट नहीं हो रही है। बट मैम इंडिया के नंबर से सारे, ठीक है, ये फोन भी व्हाट्सएप पे भी यूज कर रहे हैं, यानी फोन ट्रैक हो सकते हैं, बैंक अकाउंट सारे इंडिया के हैं, तो मैम ये ट्रैक क्यों नहीं हो सकते फिर? That's right. हमारा सिस्टम क्या सच में, and that's the reason why the agencies have to get into it to ensure that there are less victims like Ankit, and in future there are several who are far more careful. Thank you so much for joining us, Amit Dubey, Dr. Oja and Ankit.